Namaste my dear students, welcome back to my YouTube channel eEducator. In this video series of exercise, a subject social science standard 10, lesson number 2, cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. स्टैंडर्ड 10 के सोशल साइंस के लेसन नंबर 1 to 6 कल्चरल हेरिटेज ही दिए गए, अलग अलग दिए गए लेसन नंबर 1 to 6 हेरिटेज के हिसाब से चैप्टर दिए गए. नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स. वी डिस्कस अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हियर. Okay, and previously uploaded videos there, and videos are available in a YouTube channel. आप playlist में जाइए, you can find the videos which I have previously uploaded. You can also find this video link in the video description box. जाइए वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी. सो इफ यू नॉट सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब and share with your friend. Okay, after completion upload of this textbook exercise, I will also upload the videos of a board previously questions which has been asked in the board exams chapter wise. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, दैट रिलेटेड दैट सॉल्यूशंस will also uploaded here. Even the objective questions, chapter wise objective questions will also be uploaded here. So if you have not subscribed the channel, subscribe. These videos will very helpful for upcoming board exams. Okay, let's start the discussions of lesson number 2, textbook exercise. It is a textbook exercise. Textbook exercise के बारे में हम देखते हैं. Okay, let's see that what is the weightage of lesson number 2 in the board exam. The weightage of this lesson number 2 in the board exam is of 5 marks. Okay, what is the weightage? Total weightage जो बोर्ड एग्जाम में है उनका 5 मार्क्स का है. ये जो वेटेज है में जो लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के एग्जाम से हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यही रहेगा. नेक्स्ट बोर्ड में भी यही रहने वाला है. 5 मार्क्स का वेटेज है. टोटल वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का. 5 मार्क्स के अंदर आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क इन अ बोर्ड एग्जाम्स. So generally in a lesson number 2 there will be a 2 questions of 2 marks. Okay, there will be a 2 questions of 2 marks. ठीक है, 2 questions of 2 marks वाले. तो कितने मार्क्स हो गए? टोटल 4 मार्क्स एंड 1 एज अ ऑब्जेक्टिव्स विल बी देयर. एक आपको ऑब्जेक्टिव्स वहां पर पूछेंगे. टोटल हो गया 5 मार्क्स. सो देर विल बी अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. आप लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर देखिए, उसे अगले बोर्ड के पेपर देख लिए. सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी में लेसन नंबर 2 से 2 क्वेश्चंस हो गए. इवन इन द बोर्ड अभी नेक्स्ट ईयर का जो 26 में बोर्ड आएगा उसमें भी आपको सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन लेंगे. सो लास्ट ईयर अभी जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ, ये लेसन नंबर 2 है, उसमें से आइडेंटिफाई वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई एंड राइट. आइडेंटिफाई एंड राइट होता है. आइडेंटिफाई से लाइक क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई एंड राइट ऐसे लिखा जाता है. एंड इसमें ए और बी अदरवाइज 1 and 2 करके लिखते हैं. 1 and 2 इसमें एक एक क्वेश्चन होता है जो 1 वर्ड का आंसर ही होता है. जनरली ये लेसन में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर में यही था कि आइडेंटिफाई एंड राइट. ओके, श्रृंगार भक्ति से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और वेदा ऑफ म्यूजिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. 2 मार्क्स का. एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था भवाई वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. इस बार भी था, राइट ए नोट ऑन भवाई आर्ट. 2 क्वेश्चन से एंड 1 वाज ऑब्जेक्टिव से. So I think you understood that weightage of lesson number 2 is of 5 marks, and make sure that there will be a questions of 2 marks वाले 2 क्वेश्चन. जैसे सेक्शन बी में आपको टोटल जो क्वेश्चन दिए जाते हैं 13 होते हैं. 13 में से आपको 9 अटेम्प्ट करने होते हैं. 13 में से आपको 9 अटेम्प्ट करने होते हैं. और लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन 1 में से 2 क्वेश्चन होते हैं, लेसन नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन होते हैं. बाकी अगले वाले चैप्टर को भी मैं बताऊंगा कौन से लेसन जो. सो ये तो श्योर ही है, इसमें से 2 और इसमें से 2. तो 9 में से आपको 4 क्वेश्चन तो लेसन 1 and 2 से मिल जाएंगे. लेसन 1 and 2 में से 2 मार्क्स के 2 आते ही है. ओके, उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव रहता है. सो विल गेट अ 4 आंसर फ्रॉम 1 and 2 लेसन. ओके, 1 and 2 लेसन में से आपको ये मिल जाएंगे.
Okay, let's move forward. Let's discuss here. While writing the answers in a notebook, you make sure the handwriting must be neat and clean, and you will make sure that the answer must be in a point wise. आप एग्जाम के अंदर भी इनके आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखोगे. Write the answer a point wise. Do the use a margin to the bullets. पॉइंट्स के जो बुलेट्स होती है या जो आप एरो करते हो, स्टार करते हो, जो भी करते हो, उनके लिए मार्जिन का यूज कीजिए. ओके, यूज अ मार्जिन टू राइट द ओके टू द बुलेट्स है. तो स्टार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल में दिया गया. एक्सप्लेन द क्ले वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज. So clay work of ancient Indian heritage as an important human being associated with clay since ancient time. So ancient Indian heritage, men and clay have been closely associated since ancient times, since the beginning of a human civilizations. Okay, that a human being associated with the clay. So the whole life of a man revolves around it, from the cradle to the grave. Cradle to the grave. From cradle means you can show them from birth till the death. Okay, from birth till death, the human being, the life of a human being associated revolves around the clay or आप soil बोल सकते हो. Cradle to the grave and whole life. Now, before the discovery of a metal, it so observe that men mostly use things made of a clay. Before the discovery of a metal, bronze age, उससे पहले जो stone age था. So during the stone age, before the discovery of a metal, it is observed that mostly the things which used by utensils which are used by the human being, they were made out of a clay. किसमें से? मिट्टी से बनाए हुए बर्तन. मिट्टी से ही सब कुछ वो बनाते थे, पत्थर का, मिट्टी का रहता था. So what things were they were prepared out of a clay? Clay toys, pots, pitchers, earthen lamp, clay stove, clay wares. So they were prepared by the human beings in the ancient times from the clay here. So kitchen wares were made of the clay to store the water. Even kitchen wares, so kitchen utensils, so they also prepared or made out of a clay to store water, milk, curd, buttermilk. Even the various types of liquids were filled in them. So whatever the kind of different types of a container they prepared out of a clay, and they used to fill different liquids them. So kitchen wares से kitchen utensils थे, ज़्यादातर वो मिट्टी से ही बनाते थे वो. So next number, the wall of the house, like a kubas, were plastered by the paste of a cow dung. So okay, houses which were prepared there. So wall of the kubas, huts, small huts, kubas or small huts, like a triangular shape का जो रहता है huts, kubas, they were plastered by the paste of a cow dung and clay. They mixed the cow dung के साथ वो clay mix करते थे, और जैसे हम सीमेंट से प्लास्टर करते हैं, ओके, cow dung and clay का यूज, स्ट्रो का भी यूज करते, उस हिसाब से वो प्लास्टर किया जाता था, वॉल को प्लास्टरिंग किया जाता था. So potter's wheels, which potter's wheels is considered to be the first device for the clay work in ancient time. Remember this, which wheel? Potter's wheels is considered to be the base device for the clay work. Okay, for preparing a different utensil, for the preparing a different utensils, okay, potter's wheels were used है. potter's wheels का बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता था. So in present time also we can see Garba in a Navratri, different things which are prepared out of a clay. Even the remains of the old and handmade clay utensils found from Nagarjun Kunda, okay, Nagarjun Kunda साउथ इंडिया के अंदर, लांगणज मेहसाणा के अंदर बहुत सारे हमें रिमेन्स पाए गए विच वर यूज्ड बाय द एंशिएंट टाइम के अंदर, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन और सब कुछ यूटेंसिल जितने भी थे वहाँ से हमें मिले हैं. So leather work is very old art of India. Explain the statement. Like a clay work is one of the old art. Same the leather work is also old art of India. Leather. Okay. Skin of a dead animals were used for various purpose of the ancient times. So skin of a dead animals, they were proceed and they were used in various purpose. अलग अलग काम के लिए उसका यूज किया जाता था. After the death of animal, so after the death of animal, the skin were proceed in properly with the traditional method, whatever the manner, the different methods were used to proceed the skin of a dead animal.
एनिमल का स्किन रिमूव करके उसको प्रोसीड अच्छी तरह से किया जाता था इन ट्रेडिशनल मैनर, हाथ से वो काम करते थे सब कुछ। एंड लेदर वॉज यूज फॉर मेकिंग एंड दे प्रिपेयर द लेदर एंड दे वर यूज फॉर मेकिंग मशक एंड कोस टू फेस वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एग्रीकल्चर हियर। तो मशक आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ ह्यूज leather pouch which were used to fetch water from the from the well। पानी को फेच करने के लिए, निकालने के लिए मशक का यूज किया जाता। कोस उसके साथ बांधने के जो यूज किया जाता था वो सब कुछ। मशक एंड कोस टू फेच द वाटर फ्रॉम वेल, एग्रीकल्चर के अंदर ये यूज किया जाता था। एंड इट वाज यूज फॉर मेकिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ए ड्रम, ढोलक एंड तबला का वो यूज करते थे। Even bellows used by the blacksmith and various types of food wares। देखिए blacksmith bellows का यूज करते थे जब blacksmith आयन की जो चीज वस्तु बनाते हैं उसके अंदर उसको गर्म करने के लिए, जो कोल होता था कोयले को गर्म करने के लिए जो वहाँ पर हवा का प्रेशर लगाना पड़ता है उसको, तो उसके लिए बिलोज का यूज किया जाता था। दे वर यूज्ड बाय द ब्लैकस्मिथ टू हीट द आयन्स। So various type of food wares are prepared out of this leather। Even leather belts are prepared to tie the animal। Leather was used in a various way। Now leather was used to prepare a shield which was used in during the wars। So leather was used, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर। ओके, सो लेदर वर यूज्ड टू प्रिपेयर अ शील्ड विच वाज यूज्ड इन ड्यूरिंग द वॉर। ओके, शील्ड प्रोटेक्शन के लिए जो शील्ड यूज किया जाता था। ओके, सो दैट वाज आल्सो प्रिपेयर्ड आउट ऑफ अ लेदर, उसके ऊपर लेदर का लेयर्स लगाया जाता था। लेदर वाज यूज्ड टू प्रिपेयर शील्ड विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर्स। स्वॉर्ड एंड शील्ड जो यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी उसमें से बना है। सो वेल नाइटेड मोजरी ऑफ राजस्थान, shoes, leather knitted purse, belt, other things made out of leathers from horse and camel like a saj, palan, lagam and whip were made out of leather। yes, okay, camel के ऊपर रखने के लिए, so camel को डेकोरेट किया जाए, उसके ऊपर डेकोरेटिव जो क्लोथ वो सब कुछ रखते हैं। साज और पलान बैठने के लिए, केमल के ऊपर बैठने के लिए पलान लगाई जाती है, वो सब जो था दे वर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ लेदर से बनाते थे। So lagam and weave were made out of leather। So it can be said that leather industry has a prominent place in ancient India। So we can say that the leather industry has an important place in ancient India। Third number, give introductions of संगीत रत्नकार। संगीत रत्नकार के बारे में आपको लिखना है कि पंडित सारंग देव wrote a book of संगीत रत्नकार, एक बुक का नेम है जिन्होंने पंडित सारंग देव ने वो लिखा है। पंडित सारंग देव is considered as a scholar of music, considered a scholar of music माने जाते थे पंडित सारंग देव। and he lived in दौलताबाद, so he was familiar with the south and north Indian music। दौलताबाद कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र के अंदर है। so he was center part of India and he was familiar with the North Indian music and he was familiar with the South Indian music। So Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande, one of the scholar of music, considers Sangeet Ratnakar is a most authentic book on music। That is a Sangeet Ratnakar, so most authentic book on music considered by Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande। And what was believed that it is believed that he to be unique and understanding all the aspect of a music, to understand all the aspect of a music, this book Sangeet Ratnakar was important। So give information about Kathakali dance। We need to write different classical dance of India has been mentioned in a textbook। one of एक दिया गया है Kathakali dance। So Kathakali dance is very famous from the Kerala। Is famous from which state? Kathakali dance is famous from which state? It was famous from the Kerala। And the word Kathakali has been derived from the dramas based on so the word Kathakali, from where the Kathakali is derived, Kathakali word has been derived from the drama, so based on ancient epic Ramayana and Mahabharata। Kathakali word is derived from the word Ramayana and Mahabharata and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam language। संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेज से कथकली वर्ड डिराइव्ड हुआ है। And these characters of these art were beautiful plated attire। What kind of attire they wear? They wear the kind of a beautiful
plated attires they wear. Okay, plated attires they wear. And these Kathakali dance, the characters put on his crown. So they put a crown. Characters who perform the Kathakali dance, they put a crown on his head. An artistic performance, they made artistic performance. They do the dance on the stage, and they express dance with a facial expression and pose hands. Okay, the kind of a pose he made on the stage, kind of a facial expressions he made with having a crown, kind of a plated attires there, and the kind of they introduce the characters of a trilogue in front of a curtain जो होता है, and the light of earthen lamp only. स्टेज के ऊपर सिर्फ earthen lamp रखा जाता है. ठीक है, ज़्यादातर लाइटिंग नहीं होता है, बीच में earthen lamp रखते हैं और उसके बाद में वहाँ पर डांस परफॉर्म किया जाता है. सो पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोर कलामंडलम, और उसके साथ आता है कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन वर earned a great fame in the nations worldwide. These are the good performers of Kathakali dance in India. Remember those names. Question number 2. What is the right answer the following questions in a point wise? Again the long answer, but लिखा है point wise लेकिन छोटे छोटे आंसर है यहाँ पर. These are the important for the 2 marks. ये 2 marks के जो उनके लिए भी है. Okay, number 1, explain the progress of a dance art in India. Point wise है, वैसे भी ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि point wise लिखिए. Dancing art in India. So dancing art, here we need to write a classical dance of India. Classical dance, explain the progress of a dancing art in India. So all the classical dance के बारे में आपको 2-2, 3-3 points, 4-4 points यहाँ पर आपको लिखने, whatever 5 to 6 classical dance which have been mentioned here. Okay, let's see that how dance was progressed in country. Dance is one of the medium of realizing beauty with the tal and lay. Dance are performed with the tal and laya. So India has a wide varieties of traditional classical dance. We had a Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Kathakali, Odissi and Manipuri. So we discuss here a few points about these classical dance. Bharatnatyam, from Bharatnatyam कहाँ से origin? The origin of Bharatnatyam is believed to be Tanjore district. कहाँ से? Tanjore district in Tamil Nadu. कहाँ से origin थे? So Bharatnatyam, so remember the Tamil Nadu, Tanjore district of Tamil Nadu. And there were the 2 books. इसके ऊपर 2 books है. There are 2 books. Natya Shastra by Bharat Muni. Remember the book names. Okay, remember the book name also. Natya Shastra बुक है, भरत मुनि ने लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन ड्रामा के बेस पर है. एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर, 2 बुक है. नाट्य शास्त्र भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर, विच ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम. वहाँ से भरतनाट्यम का सोर्स हमें मिलता है. रिमेंबर दिस फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स. नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण किसने लिखा है? नंदिकेश्वर ने लिखा हुआ है. So Vijayanti Mala, these are the performers, the persons who are related with the Bharatnatyam. Vijayanti Mala, Hema Malini, Mridulani Nisharabai, Gopi Krishna. So have preserve these heritage. The performers Bharatnatyam वो अच्छी तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये परफॉर्म करते हैं. कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज फेमस फ्रॉम आंध्र प्रदेश. कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश का ये फेमस डांस है, क्लासिकल डांस है. इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटीज. कुचिपुड़ी डांस डिस्क्राइब द वुमेन्स ब्यूटी. सो गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू etc. are well known dancers who have preserved these ancient traditions. Okay, remember Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy and Shobha Naidu. These are the performers of well-known performers of a Kuchipudi dance. Kathakali dance. Okay, Kathakali dance. This style of dance is famous in Kerala. Look, Kathakali and Kathak. Kathak north में आता है, Kathakali south में, केरला के अंदर. So this style dance is famous in Kerala. Is however, we need to read the facial expression of recognized characters in a characteristic of a character. So they performs various pose and facial expression on a stage, and we need to identify the characters with their facial expression. Poet Kerala
Sri Vallathod, Kalamandalam, Krishna Prasad, and Shivaraman earned this great fame in nationwide and worldwide with the Kathakali dance. Another Kathak dance, they do not confuse with the Kathakali and Kathak. Kathakali Kerala and Kathak जो आता है वो नॉर्थ के यूपी के अंदर आएगा. So the lines, कौन सा लाइन है? The line कथन करे सो okay, कथक कहावे is related to the कथक डांस. वो कथक डांस से ये लाइन रिलेटेड है. So this style dance, dancer turns around one leg. Kathak dance के अंदर क्या होता है? The dancer who turns around the one leg and show the references of a dancer. And women wore narrow trouser and frilled frock. Attire होता है उसका narrow trousers and frilled frock. The kind of a frilled attires, ज़्यादा frilled frock attire से वो पहनते हैं. And development of Kathak dance depends on the life events of a Lord Krishna. Kathak dance is related with the Lord Krishna. The style of dance has been kept in alive by the Sri Birju Maharaj, Sitara Devi, and Kumudin Lakhai. These are the some of the persons who were the great performers. Dance के अलग-अलग उन्होंने अच्छी तरह से perform किए हुए. Manipuri dance. This dance style is chiefly based on Raslila and Balila of Sri Krishna. And Manipuri dance is divided in two types, Lasya and Tandav. Remember this, Lasya and Tandav here. Manipuri dance के दो पार्ट में Lasya and Tandav ये दो. The plaited green colored petticoat is known as a kumin. Okay, especially the performers who wear the plaited green colored petticoat, उसको क्या नाम से जाना जाता है? Which known as a kumin. The green color petticoat which wear by these performers, dance performance in Manipuri dance, which known as a kumin. Remember, Lasya, Tandav, kumin in a Manipuri dance. And Guru, okay, Ambo Singh, Athambo Singh, Guru Bipin Sinha, Naina Javeri, Nirmal Mehta have gained worldwide fame in a Manipuri dance. Information, second number, give information about a Garba and Garbi of Gujarat. The differences between Garba and Garbi. Garbas are performed, Garbis are sing. गरबा जो परफॉर्म किया जाता है उसको गरबा बोलते हैं. गरबी पोएट दयाराम ने लिखी हुई है श्री कृष्ण भक्ति को. गरबी जो गाने के लिए होती है. द वर्ड गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप. गर्भ के अंदर रखा हुआ दीप. ओके, गर्भदीप. द एंटर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टेम्पल इज नोन एज अ गर्भदीप. ओके, गर्भदीप इसको यहाँ पर जो इस वर्ड से डिराइव हुआ है. So earthen lamp is placed in the whole pitches and keeping in the whole head. So on the head, dancer moves around in a circle. Yeah, generally in Garba we know where earthen lamp is placed in the whole pitches के ऊपर सर के ऊपर रखकर they move round and round in the circle. Garba is performed during Navratri festival of Hindu month of Aso and Shukla Paksha in whole Gujarat. Navratri we know very well how we perform. Okay, Gujarati people perform sing a garbi. Sorry, garbi आएगा. Garbi ये नहीं आएगा यहाँ पर. Okay, garbi to worship and pray Adya Shakti. To worship and to pray the Adya Shakti, the garbis are used. Poet Dayaram has written a garbi. वो सारे जो लिखी garbi वो गाई जाती है. Garba as are performed here. So Gujarati people perform garba and they also sing a garbi. Perform the garba and sing a garbi to worship and the prayer of Adya Shakti Mother Jagdamba. Gujarati poetry known as a garbi is chiefly associated with the Krishna Bhakti. Most of the garbi which are there, poetry जो है वो कृष्ण भक्ति से related है. And garbi Gujarati poet Dayaram wrote the poems in Gujarati which made ladies to sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love के बारे में. These are performed there. Third number, describe the art of a diamond bead work and animal work of India and Gujarat. So we need to write all the information about diamond bead work and animal works in India. The peninsula, it has a 7,570 km long coastal line surrounding all three directions. So diamonds, beads are plenty available because of a long coastal area. So diamonds, third in ornaments, diamonds are important part.
in a jewelry. So diamond stud ornaments made by the Indian artisans are in a great demands in foreign countries. Diamonds so are presently also in a demand in foreign countries. In ancient times also diamond stud ornament jewelry के अंदर जो लगाए जाते diamonds were great demand in foreign countries. Diamonds, rubies are precious stones जो अलग अलग आते हैं. Beads, emerald and topaz were used to adorn and beauties. Diamond, rubies, beads, emerald, topaz, these are the precious stone. अलग अलग कलर के जो stones आते हैं वो throne के ऊपर, clothes के ऊपर, रिच पीपल अपने घर में रखने के ज्वेलरी के अंदर वो स्टड किए जाते हैं. सो डायमंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. डायमंड के साथ ये भी अलग अलग प्रीशियस स्टोन लगाए जाते हैं. So gems were used for making a jewelry like a bracelet, garland, thrones, crowns of a kings. Gems, diamonds, they were used for making a jewelries. Even bracelet, garland, thrones, जो राजा थे उसके thrones, सिंहासन पर बैठने के लिए crown जो थे उनके बनाने के लिए यूज करते थे. So bead work is prominent feature of a Gujarat. Bead work is found from गुजरात के अंदर ज्यादा डेवलप हुआ था bead work. So the beautiful bead तोरण, bead kind of जो स्टोन होता है, स्टोन के अंदर एक टाइनी होल किया जाता है, उसके होल के अंदर से अलग अलग उसमें थ्रेड लगा के अलग अलग चीज वस्तुएं बनाई जाती है. सो स्टोन के अंदर से अलग अलग चीज वस्तुएं बनाई जाती है. सो लाइक देवर बीड वर्क्स आर यूज सिंपली मोती टाइप, मोती भी बोल सकते हो आप उसको. ब्यूटीफुल बीड, तोरण, बारी, चाकड़ा, डेकोरेटिव, ये सब चीज वस्तुएं बनाई. डेकोरेटिव कोकोनट, जनरली कोकोनट्स विच आर यूज इन मैरिजेस, टाइम्स ऑफ सेरेमनीज, मैरिज के अंदर कोकोनट्स के उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लगाए जाते हैं. दे वर यूज. मोडिया, हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर्स एक्सेट्रा नाइटेड विद यूनिक आर्टिस्टिक वे वेयर द बीड आर यूज्ड देयर. एनिमल वर्क का क्या है? एनिमल वर्क मीन्स आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर. ज्वेलरी के अंदर, ऑर्नामेंट्स के अंदर जो भी ब्राइट कलर कौन सा? रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर जो लगाया जाता है विद डायमंड के साथ अलग अलग कलर भी उसमें लगाए जाते हैं. सो लेइंग दिस काइंड ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट इज नोन एज एनिमल वर्क. एनिमल वर्क बोलते हो कलर लगाने की जो प्रोसेस है उनको. सो एक्सपर्ट ऑफ एनिमल वर्क्स आर सीन इन स्पेशली इन जयपुर. कहाँ कर पाए जाते? Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. We found this kind of the persons who are this expert in laying skill. Fourth number, describe tribal dance of Gujarat. Tribal dances of Gujarat. Tribal dances of Gujarat के बारे में लिखता है. So tribal dance of Gujarat is seen in the times of festival, marriage and fairs and place of gods and goddesses. Please to the or pray to the gods and goddesses. Tribal dances generally they are performed during the festivals, during the marriage ceremonies, during the fairs. These dances are performed. Even the sometimes offer to please to pray the gods and goddesses. Most of the dances are performed by forming a circular. Most of the tribal dances are performed. How they are performed? They perform in a circular along with various traditional musical instruments. Different tribes they were use different traditional instrument and they perform the dance in a circular. Circular manner perform karte. The kind of instrument are used by them. Drum, traditional manjiras are used there. Even some tribes they use the thalis, dholak, and they sing song in regional language. ट्राइबल लोगों का जो लैंग्वेज होगा उस रीजनल लैंग्वेज के अंदर दे सिंग अ सॉन्ग एंड परफॉर्म्स इट. So in this dance from the known as a chado, different tribal dance are given here. Chado डांस जो ट्राइबल डांस होता है उसके अंदर क्या होता है कि द कैरेक्टर्स इमिटेट द डिफरेंट बर्ड्स क्रिएचर लाइक ए पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो. उस टाइप के वो बनते हैं. दे इमिटेट, दे कॉपीड काइंड ऑफ लाइक पीकॉक के फेदर्स लगा कर आ जाएंगे, स्क्विरल टाइप के कपड़े पहन कर आएंगे, स्पैरो. सो दे बिकम द काइंड ऑफ अ क्रिएचर लाइक ए पीकॉक, स्क्विरल, स्पैरो टाइप के कैरेक्टर इमिटेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं. दे परफॉर्म द डांस. Dance like Malino Chalo,
Okay, Thakariyo Chalo, these are seen in a Dang tribal area. These are the performs there. And where the Tippani dance of labor, Shramhari ka Tippani dance is Shramhari performed by Bhil community who perform the Tippani dance, and Koli communities dancer perform the dance in a group, a set of a thick sticks we join with a small stick stuck into the ground here. And okay, Koli dance also perform the community, they perform the dances, various dances. So various the tribal community who perform the various dance in Gujarat. Answer the following question in a brief. Number 3, name the writers of Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat. We need to write the name of these both the writers, Sangeet Ratnakar and Parijat. So Pandit Sarangdev wrote the Sangeet Ratnakar, and Pandit Ahobal wrote the Sangeet Parijat. What is the process following in a spinning? So spinning जो होता है उसमें क्या process होता है? Spinning means that the art of making a long thread using a small piece of a cotton. Okay, small piece of cotton they transfer into the thread here. वो piece of cotton जो होता है उसको thread में transfer करना होता है कि वो thread में बनाकर cotton में से thread बनाते, thread में से वो cloth बनाया जाता है. So that piece cotton balls and joining them together is called the spinning here. Cotton balls जो होता है उसमें से thread बनाते हैं and उसको एक दूसरे को join करके एक दूसरे को घुमाकर spin करके उसमें से thread बनाया जाता है. उसमें से बाद में cloth are prepared. So art of making a long thread using a small piece of a cotton from the cotton balls and joining them together is called as a spinning. Name the items of metal prepared by the artisans of Lothal. Which kind of a metal things were prepared by the Lothal people here? Lothal. So artisans of Lothal made different weapons like a sickle, drill, cow-show, needle with a copper and brass. These things were prepared into the Lothal by the Lothal artisans here. Fourth number, which designs did artisans of Harappa make on a clay utensils? कौन से डिजाइन बनाते थे? आर्टिसन ऑफ हड़प्पा मेड impressions of flowers, plants, geometric designs, clay units. Flower, they made the plants, geometric designs on a clay utensils. Now write a note on Bhavai. Write a note on Bhavai. This question was asked many times, even in the last March 25 to 2025 मार्च का बोर्ड के अंदर ये भवाई वाला क्वेश्चन था. उससे पहले भी एग्जाम के अंदर ये आ चुका है. नोट ऑन भवाई. सो भवाई इज अ इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा. It's an emotional oriented drama, especially dramatic art. They was started 700 years by 70 years ago by Asatya Thakkar, who started the Bhavai. Asatya Thakkar कब? 700 years ago by Asatya Thakkar ने ये भवाई की शुरुआत की थी. And these art which has been providing public educations through these Bhavai, they provide messages to the society, like they provide a public educations, they do the entertainment at the economical rate promoted during the Solanki era. Generally it was started in the Solanki era to promote the educations with the एंटरटेनमेंट्स ऑफ अ पीपल. इकोनॉमिकल रेट बहुत ही इकोनॉमिक रेट के अंदर लोगों को एंटरटेनमेंट भी करना था. विद द एंटरटेनमेंट दे प्रोवाइड एजुकेशंस, अवेयरनेस अमंग द सोसाइटीज आर डन ड्यूरिंग द सोलंकी एरा. इट वॉज चिफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन. वहाँ पर कोई कर्टेन नहीं होता. विदाउट कर्टेन इट इज परफॉर्म लाइट ह्यूमस, थोड़ा कॉमेडी टाइप का रहता है वो. एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन अ ट्रम्पेट पे ऊपर वो म्यूजिक प्ले करके ये परफॉर्म किया जाता है. कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड हिम फ्रॉम अ रामदेव. अलग अलग भवाइज होती है, अलग अलग रामदेव का भवाई होता है, झंडा झूलन, कजोड़ा, उस सब की अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. सो theme of Bhavai includes a protest of a social vices. That societies के अंदर जो vices थे, the कुरिवाज बोल सकते हैं, which was present in a society, उसको remove करने के लिए ये भवाई के अंदर भी प्रमोट किया जाता है कि लोगों को whatever the vices which are present in a society, how it can be removed from there. So through the Bhavai they are also performed there.
So characters like Rangla, Rangli were used, kind of comedy characters are used in a Bhavai, which called Rangla and Rangli. They used to promote the progress, okay, the progress, unko kya, sorry, okay, program like a girls education, save the girl child, these are proper. Characters like Rangla, Rangli were used to promote the program, concept program like a girls education, save the girl child, these things are promoted there through the Rangla. Okay, question number 4, MCQ. Okay, which of the following is a work of a Kalidas? We need to find the work of a Kalidas. Kalidas का work क्या है वो लिखना है. So इसमें आंसर आता है मेघदूत. Second number, with which dance style are Vijayanti Mala and Hema Malini associated? Vijayanti Mala and Hema Malini कौन से डांस है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली. They are associated with the Bharatnatyam. मेघदूत है, भरतनाट्यम है. Which Veda associated with the music? Music का वेदा किसको बोला जाता है? Is known as a Sam Veda. Okay, who is known as a Tutu-e-Hind in the field of Indian music? Amit Khusro को जाना जाता है. And Chado dance means which type of a dance? Recently we discussed is a tribal dance. Chado dance is a tribal dance. So answers are here C, D, B, D, and A. आप देख सकते हो. Okay, next 2 more are here. Siddhis are dancer of Damal dance as well as native of which country? They are native from Africa. Africa native है. Siddhis people will live in Junagadh district के अंदर रहते हैं. On which day is the World Yoga Day celebrated? So it's celebrated on 21st June. So 6th C and 7th A. So these are the answer of lesson number 2. I hope you like these videos here. And previously बहुत सारे दूसरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. And if you have not subscribed the channel, subscribe channels and share with your friends. And if you have any query, you can send me in this email address. Even you can comment these videos. Okay, stay tuned with this YouTube channels. Will uploaded a new videos, objectives, board question के solution भी यहाँ पर upload होते रहेंगे. Stay tuned with this YouTube channel. Subscribe and share with your friend. Thank you.